कुछ कुछ आप ऐड करते रहते हो. आई कीप हियरिंग फीडबैक फ्रॉम सम ऑफ यू कि ये सीखा था तो अब ये इम्प्लीमेंट कर लिया या ये होना शुरू हो गया. राइट. So that's the whole objective. If you take out even one idea from 90 minutes, trust me, that idea might be worth a couple of crores in terms of impact to your business, provided you pick it up. Right. Otherwise, though, it's like it's out there for you. It's like a candy store. Right. You need to pick up a candy, eat it, take it back home, discuss it with your team, try and see where it's going to change the way you do your things, because it's all about transformation. Transformational leadership, to be particular. So as a leader, you are expected to transform first your mindsets, then your organization. You can't do the other way around. कहीं आप सोचो कि आइडिया लेके जाएं और सीधा जाके इम्प्लीमेंट कर दें, होगा ही नहीं. So you first have to start believing in that idea. That's the first battle to always fight for any leader. तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वो बैटल और मुश्किल होता जाता है क्योंकि माइंडसेट और रिजिड हो जाता है. But I always say that an entrepreneur in particular grows younger with every passing year. Can somebody explain why? Changing environment. What else? Learning from experiences. So generally speaking, corporate setups में आप में से मान लीजिए कि had you all joined a big corporate setup, a large multinational, by now you would all be in some sort of leadership positions. कोई GM, VP, डायरेक्टर, ये सब, और आप इतने rigid हो चुके होते कि this is it with CEOs or VPs and बिल्कुल closed. Right? कोई मुश्किल से कोई एक आधा होता है उनमें से जो open to learn है आज भी. And that's why I think they're growing older. Whereas entrepreneurs are growing younger. कि जितने साल आपने निकाल लिए उतनी अकल आ गई, उतने ग्राउंडेड हो गए और उतने यंग होते गए. यंग होने का मतलब क्या है? बिकमिंग चाइल्ड लाइक. राइट. एक बच्चे की जो लर्निंग अब्जॉर्प्शन होती है वो हाईएस्ट पॉसिबल होती है बिकॉज अ चाइल्ड इज नॉट बायस्ड अबाउट एनीथिंग एट ऑल. Whatever you train in that child's mind, subconscious, conscious, वो उसको बहुत जल्दी absorb कर लेगा, अच्छा बुरा दोनों, और वो उसकी पर्सनैलिटी बननी शुरू होगी. सो एक entrepreneur जो है वो रिवर्स जर्नी जीता है, वो बच्चा बनता जाता है. And the more I deal with entrepreneurs and founders, the more I realize, so people with 30, 35, 40 years of entrepreneurship experience, वो बिल्कुल ही बच्चे बन चुके हैं. उनकी क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है सीखने की, यार और बताओ, अभी तक तो मैं बिल्कुल पागल था, और थोड़ा और बताओ. So that is the unfair advantage that all of you have. And therefore, every topic also, depending on when you saw it last, let's say you heard about, आज हम ethical leadership के बारे में बात करेंगे and influencing stakeholders के बारे में बात. हो सकता है आपने इसके बारे में 2 साल पहले पढ़ा हो, किसी ने 5 साल पहले, किसी ने MBA में. उस टाइम पे उसकी रिलेटेबिलिटी बहुत नैरो होती है. But as you become more childlike, more curious as a learner, more absorbing, more advanced in the way you're building your organization, तो आपकी रिलेटेबिलिटी चेंज हो जाती है. टॉपिक वही है. हो सकता है उस टाइम पे MBA स्कूल में पढ़ाने वाला भी कोई अच्छा ही होगा, पर उस टाइम यार क्या है एथिकल लीडरशिप, क्या सबसे बकवास लेक्चर, सिर्फ ग्रेड के लिए ज्वाइन किया. मुझे ये याद है. सो इन माई MBA देयर वाज समथिंग कॉल्ड मैनेजमेंट, नाम भी पूरा याद नहीं, MCHV कुछ था, मैनेजमेंट सेंटर ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ करके, एक बहुत खूबसूरत सा पिरामिड बना रखा जहाँ पर वो क्लास होती थी. बाकी सारी क्लासेस कॉन्फ्रेंस रूम सेटअप्स और सेमिनार ऑल्सो. दिस इज अ ब्यूटिफुल पिरामिड एंड देयर 3 pyramids. यू मस्ट विजिट सम टाइम. कोई कोर्स करने चले जाए. Where is this? This is IIM Calcutta. एंड फिर लेक्स भी हैं, 7-8 लेक्स. बट होता क्या था, हम वहाँ जैसे ही बैठते थे नींद आ जाती थी. ये टॉपिक नहीं समझ आता था, वो रिलेटेबिलिटी बनी थी. सो आई फील एवरी टॉपिक हैज़ अ टाइम when it becomes more relevant to you.
the stage at which you are in, all of these 18 topics are extremely relevant. That is why they've been picked up. Highly curated topics. After working with thousands of founders like you, we picked up these topics कि यार ये वाला point cover करना बहुत जरूरी है. ये नहीं miss होना चाहिए एक leadership, एक leader की development. So this is what we're trying to accomplish with this program. And all you have to do is pick up any one idea which suits you the most at this stage of your life. This is what I will implement. Forget about all the other big ideas. बहुत सारी चीजें होंगी. I'll keep throwing stuff at you, but pick up the one that hits you the hardest. Where? In your heart. From a timing perspective. And the job is done. Your 90 minutes are worth it. The money you've invested is worth it. सब कुछ set है उसके बाद. Right. So today we will cover two topics as I mentioned. Topic number 4, which is under for self ethical leadership, and topic number 4 and 14, which is influencing stakeholders. But we'll start with ethical leadership. The ones highlighted in bold, black, are already completed, and the remaining, of course, we will do in the next couple of sessions. So, like each time, every time we cover a topic, तो generally हम एक definition से start करते हैं. So many of you are landmark attendees, so distinctions create करते हैं. How many of you have attended landmark? Majority of you. Oh my God. Okay. Shami, you haven't attended. कर लेना कभी टाइम. शम्मी का नंबर लगा. शम्मी and Pankaj भैया. It's a nice thing. I think it's Just time it opens up something. दोनों ने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया है. ये लैंडमार्क के लिए फोन कर रहा है. हाँ ये बस यही प्रॉब्लम है लैंडमार्क में. इसी वजह से मैंने पैसे देने के बाद भी सेकंड वाला नहीं किया. सोचो एडवांस वाला. मैंने Advance. ऐसी पैसे में दे छोड़ दिए. दिया था. पैसे इसके बाद नहीं यार. मैंने ये भी. follow Advance करना मैंने नहीं किया है. कोई कितना भी उनको बोल देना ये चीज वो कहते हैं ये तो हम करके रहे. See, I think it वो works for them. It's करते their हैं, but then they expect you also to do that. fault. I You know, that makes is it- more bugging. वो MLM स्कीम बन जाती है कुछ. हाँ. Even though कुछ कमीशन नहीं मिलता है. Anyway, but I think what I really enjoyed about the landmark idea was the concept of creating distinctions. You know, हर topic को उसके depth में समझना, and then you relate to it a lot better. You start applying it to your life. So we will discuss हमारा structure क्या रहता है हर presentation का. Distinction पहले समझना कि ये topic है क्या. उसको appreciate कर पाना. That's very important in order to relate to it. Then we usually share a framework. Something that allows you to use it. कि भाई कोई algorithm बता दो, कोई system बता दो ताकि अब मेरा मन कर रहा है मुझे समझ आ रही है ये चीज़ को use कैसे करना है. And then we share an inspiring story of a transformational leader जो इस चीज़ को लेके काफ़ी passionate है, ताकि आपके लिए एक role model बन पाए, एक reference बन पाए. हम कोई भी अच्छा काम करने जाते हैं, कोई भी नई चीज़ सीखते हैं, अगर कोई रोल मॉडल सामने नजर आए तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. यार इस आदमी ने भी किया था तो मतलब कोई ख़राब चीज़ तो नहीं है, एंड ऐसा भी नहीं है कि वो सक्सेसफुल नहीं है. सो वी ट्राई टू शेयर दैट कि उसने ऐसा काम किया, उसकी कंपनी भी ठीक ठाक चली उस वजह से, मतलब कुछ लिंक तो होगा. पीपल आर नोन फॉर सर्टन थिंग्स. सो अजीम प्रेमजी इज रियली नोन फॉर एथिकल लीडरशिप. ही इज़ वन ऑफ the world's leading philanthropists. He's never cared about his own wealth, in spite of the fact that he earns shitloads of them every year. Right? So there's something he must be doing right about the way he's built Wipro. We'll talk about that. Okay. So that's going to be the structure of our learning. Distinction, a framework that you can apply, and an inspiring story to keep you hooked to the idea that this is worth it. I think ये करना चाहिए. That is the objective. ठीक है जी? Any questions so far? Let's go ahead. So, in today's session, we will learn what it means to be an ethical leader. How an ethical leader can transform an organization, because हम बात कर रहे हैं कि आप अपनी कंपनीज को बदलना चाहते हैं, right?
तो अपनी कंपनी को बदलने के लिए सबसे पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा. वी आर द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर्स on the destiny of our company and the karma it does every day. Right? और अपने आप को बदलने के लिए अपने mindset को बदलना पड़ेगा. Right? So how ethical leadership helps you transform a company is the link that we want to work on. And how ethical leaders can create a culture based on shared values that aligns business and people's strategies. Because whenever we talk about ethical leadership, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये निकल के आती है कि हु इज़ गेटिंग इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ योर लीडरशिप. एट अ वेरी फंडामेंटल लेवल पीपल को हम स्टेक होल्डर्स भी बोल सकते हैं. स्टेक होल्डर्स कुड बी योर एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स. अभी पीछे आप देख ही रहे हैं वो आई थिंक आप थोड़ा ज़्यादा क्लोजली फॉलो कर रहे होंगे प्रशांत सिकेवा के जो इन्वेस्टिंग कंपनीज हैं वहाँ पर काफ़ी गवर्नेंस इश्यूज आ रहे हैं. सो एथिकल लीडरशिप हैज़ बिकम एन इशू. लीडरशिप डायनामिक है, कॉम्पिटेंट है, वैल्यू क्रिएट करनी आती है इन्वेस्टर्स के लिए, अच्छे अच्छे डिसीजंस लेने आते हैं, बट एथिक्स में कॉम्प्रोमाइज. एंड दीज आर पीपल विद ग्रेट क्रेडिबिलिटी, ग्रेट पेडिग्री, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं सारे. दैट इज नथिंग टू डू विद एथिकल लीडरशिप. And sooner or later, it will bite you back. Like in the case of Bharat Pay, like this guy, Ashneer Ashneer Grover. Grover, right, and his wife. So the